Before we move on, um, we need to understand the concept of limits from a completely different perspective. Different perspective in the sense that the perspective that you are familiar with is you've just studied what limits are. You've just studied how to find the limits, or how to conclude, or when to conclude that the limit does not exist. Okay. But before we begin with, we must understand what do we exactly mean by the concept of limits. Okay. So before I move on, I would like to, you know, explain that first, and then we move on to 4.4 in details. Okay. So we started with 4.4 that day. Is my screen visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now let's come back to limits. Okay. Abhi, let's talk of just the standard thing when we say limit x tending to a fx is equal to L. Okay. Okay. Let's see what we understand by this, and let's first of all see why do we need this. Okay. See, the easiest example that I think before starting with limits, even your NCERT books talks of is this. See, what happens is we had functions with us. We had polynomials, we had exponential functions, we had logarithmic functions, we have trigonometric functions. Everything was working fine in the sense that we had a function, we could find the value of the functions at specific points, and then we could see how the function behaves. We could see that quadratic polynomial would end up in either a circle or a parabola or an ellipse or a hyperbola, depending upon various conditions. Okay. Now the problem came when we came across this function, this sweet looking function, and somebody asked me to find its value when x is 2. Okay. F of 0 is fine, f of 1 is fine, f of 3 is fine, f of minus 4 is fine, everything was fine. But somebody asked me, what will be the value of the function when x is 2? Now, what will be the value? क्या करोगे अगर f of 2 निकालने को दिया जाए इस फंक्शन के लिए? बोलो. Infinity. Ma'am, not defined. Undefined. Ma'am, 4 answer. 4. 4. Yes, ma'am. 4. और कौन बोल रहा है 4? Yes, ma'am. 4. Yes, ma'am, 4. 4. Anybody else who agrees with 4? चलो 4 मान लेते हैं 1 मिनट को कि हाँ 4 इज द राइट आंसर. आई एग्री. बट 4 आया कैसे? मैम उसको रेशनलाइज करके फैक्टराइज कर दिया मैम. एक मिनट मुझे लिखने भी दो. तुमने क्या करा, इसको लिखा x minus 2 x plus 2 अपॉन x minus 2. यही बोल रहे हो ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब क्या किया? इसके बाद x minus 2 से कैंसिल कर दिया. minus 2x. हाँ जी, x minus 2 से कैंसिल कर दिया. अब कैंसिल करने का क्या मतलब होता है? देखो, मेरे को अभी तक सिर्फ 4 ऑपरेशंस पता है मैथ्स की: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. जब आप कह रहे हो कैंसिल कर दिया का मतलब क्या हुआ? क्या किया एक्चुअली? मैम नॉर्मली डिवाइड कर लो -2 को -4 को
x माइनस 2 से डिवाइड कर दिया, बट मैम व्हेन फिर x इज 2, तो मल्टीप्लाई होके x प्लस 2 आ जाएगा। बट व्हेन x इज इक्वल टू 2 तो x माइनस 2 तो 0 हो गया। और अभी पिछली क्लास में तुमने मेरे को इतनी कहानियां सुना दी थी कि डिवीजन बाय 0 तो डिफाइंड ही नहीं है। तो फिर कैसे हो गया ये? इसमें जीरो आ कहाँ रही है? मैम पहले अरे लिमिट मैम x हमने is जीरो equal तक to, सॉल्व कर दिया ना। I am saying we have to find the value of the function when x is equal to 2. When x तो is मैं equal to 2, can you divide by x minus 2? मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तुम एक कह बार रहे हो, और बोलना। तुम कह रहे हो कि x माइनस 2 कैंसिल कर दिया, ठीक है, x माइनस 2 कैंसिल कर दिया, तब मतलब आपने इस पॉली देखा जाए तो आपने क्या करा, इस पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड किया। यस मैम। यस ये मैम। किया ना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। बट जब x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हो, डिवीजन तब तक ठीक है जब तक x माइनस 2 नॉन जीरो है। उसके लिए तो हमारे पास वैसे भी वैल्यू आ रही है। कैन यू कैंसिल x माइनस 2 फ्रॉम हियर व्हेन x इज इक्वल टू 2? मैं ये पूछ रही हूँ। नो मैम। नो मैम। क्योंकि तुम भाई पिछली क्लास में तुमने ही तो मुझे पढ़ाया था ये चीज, मैंने थोड़ी पढ़ाई थी तुम्हें, तुमने पढ़ाया और गलत नहीं पढ़ाया, ठीक पढ़ाया। डिविजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, वी कैन नॉट डिवाइड। तो इसका मतलब व्हेन x इज इक्वल टू 2 तो हम तो x माइनस 2 भी कैंसिल नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे फंक्शंस में, ऐसे केसेस में हम अपने फंक्शन की वैल्यू जिस तरह से अभी तक निकालते आ रहे हैं उस तरह से नहीं निकाल सकते, ठीक है ना? तो मतलब हमें कुछ और तरीका चाहिए इस फंक्शन के लिए, और ये फंक्शन मैं इसलिए कर रही, इसलिए लिया है बिकॉज दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फंक्शन। अब देखो, somebody said okay problem x equal to 2 पे आ रही है ना, let's see what happens when x is say, चलो मैं इधर x की वैल्यूज लिखूंगी, इधर fx की वैल्यूज लिखूंगी, और दोनों तरफ x एंड fx एक टेबल बना दिया। So I realized that it's only x equal to 2 that is creating a problem. ये रहा ना मेरा 2 on my real axis, this is the point 2. x equal to 2 पे मुझे बहुत दिक्कत आ रही है, but then before 2 and after 2 there is not much of a problem. Okay, so what I do is I see at x equal to 1.9. ठीक है, अब 1.9 पे तो x minus 2 0 नहीं है, right? So that means I can cancel x minus 2 there. So my function will be f of x will be simply x plus 2, and I find this value when x is 1.9. ठीक है, तो क्या आ गई वैल्यू 3.9। तो ऐसा नहीं 1.9 तो 2 से बहुत दूर है, 1.9 और 2 के बीच में भी तो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स। सो आई गो टू 1.99 and I get 3.99. I go to 1.999, I get 3.999, so and so on so forth. As I get closer and closer to 2, see, out of 1.9 and 1.999, which one is closer to 2? Obviously 1.999, right? So if I keep on increasing this, I observe that as my input gets closer and closer to 2, my output gets closer and closer to 4. Right. So this is when I am taking x from values of x less than 2. What will happen if I consider, if I just cross 2 and look at the values? That means I say let my x be 2.01. Okay, so it will be what? Because फिर से at when x is 2.01, x minus 2 is non-zero, and therefore I can cancel x minus 2 when x is 2.01, and so my function still becomes fx equal to x plus 2.
So what will be my output then? 4.01. I change it to 2.001, I get 4.001. I change it to 2.001, I get 4.0001, and so on and so forth. Now, even from right hand side, when you are moving towards 2 from right hand side, this value is more closer to 2 compared to this value. And as you can see, the output, this value is more closer to 4 compared to this value. So that means when I move towards 2 from right, then also my output is getting closer and closer to 4. That means what? That means as I will get closer and closer to 2, my output would become closer and closer to 4. I'm not saying equal to 4. I'm saying closer and closer to 4. But the moment I reach 2, my function becomes undefined. Because the moment I reach 2, this polynomial, rational polynomial, takes the form 0 upon 0, which is not defined so far. So that means for such functions, maybe it's not easy to find the value at that particular point. But we can find the values at points closer and closer to that point, and we call such values as the limiting values because they are approaching, they are getting closer and closer, but not equal. Okay, so hello. Sir, I am in a class right now. Can you please call me a little later? Okay, so they become the limiting values. And that is why the concept of limits was needed. Okay, mind you, you are not getting, that's why for this function we say limit x approaching to x square minus 4 upon x minus 4 is 4. Not f of 2. We cannot say f of 2 is equal to 4. No. F of 2 is not defined. It is the limiting value, not the exact value. There is a difference now. See, limiting value means आप उस value के जितना पास जा सकते हो आप जा रहे हो, but आप उस value को कभी भी attain नहीं कर पाओगे. Because the moment, it's like, you know, it's like imagine yourself, देखो क्या हो रहा है कि हमारा जो fx है जो हमने लिया, which is x square minus 4 upon x minus 2, this we can say is x plus 2 whenever x is not equal to 2. We cannot say that this is actually equal to x plus 2. Humko will have to put this condition, otherwise how can we cancel x minus 2? Because the moment x is equal to 2, x minus 2 is 0 and division by 0 is not defined. Okay, so your function takes this value. Your function reduces to this function at all values of x which are not equal to 2. So 2.000001 is also not equal to 2. So if for that point also it will be x plus 2, but not when x is equal to 2. Okay, so and x plus 2 is nothing but a straight line, right? So I can say if I just try to plot, it will be something like this. Okay, I'm just trying to plot it, what is going to happen. So this is the point 0, 0. This is the point when x is 1. This is the point when x is 2. This is the point when x is 3. Okay. Now, it's only at 2 which is a problem, right? Now, see what happens when x is 0. Your fx is 2. Okay, so fx is 2 means you are somewhere here. Okay. Now, what happens when x is 3? Your fx is 5. Okay, so that means you are somewhere here. Okay, so it's going to be, let me just, it's going to be a straight line, something like, it's like imagine yourself walking on this rope, which is your horizontal axis. ठीक है? मतलब your feet
are here on this axis, right? आप धीरे 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 इस पे चल रहे हो, right? And imagine yourself, like you're dancing on the rope, but your hand, up is tracing this graph. Okay, as you step ahead, your hand actually moves up and down so that this straight line is traced. Okay, so the moment you reach any point till 2, you are going to follow this pattern. So it's going to be a straight line, something like this. But then suddenly at 2 realize it's not possible, because the moment you reach 2, your hand has no rule. Your hand doesn't know where to go. So what you do is, you do not step on 2. The moment you are closer to 2, you take a jump. Okay, the moment you take a jump, that means no part of the graph gets traced at this point. क्योंकि आपने यहाँ पे जंप ले लिया, आपने 2 पे तो पैर रखा ही नहीं. आपकी टो चलती गई चलती गई चलती गई, 2 के जितनी पास आप जा सकते थे आप गए, बट आपने 2 को टच नहीं किया, राइट? तो इसीलिए जैसे ही आपने 2 को जंप किया तो यहाँ पे तो गैप आ गया, बट जैसे ही आपने 2 को क्रॉस किया फिर से आपका ग्राफ प्लॉट होना शुरू हो गया. ओके, सो दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स there is a gap in this graph. I cannot trace it for x equal to 2. Okay, but as I get closer and closer to 2, whether I go from this direction or I go from this direction, my rule, my hand is going to follow this rule of x plus 2, and that is how it gets traced, right? अब प्रॉब्लम आई, ठीक है, क्लोजर एंड क्लोजर. अब क्लोजर तो बहुत ही वेग टर्म हो गया. किसको क्लोज? जैसे हम उस दिन नेबरहुड की बात कर रहे थे, राइट? योर ओन हाउस इज योर नेबरहुड, your neighbor's house is your neighborhood, your colony is neighborhood. Similarly, but these terms are certain terms that are vague in the sense that it's up to the decision maker. मेरे लिए closeness कुछ हो सकता है, आपके लिए closeness कुछ हो सकता है, right? So depends upon मैं कहाँ काम कर रही हूँ, मुझे कितना प्रिसीजन चाहिए, तो उसको मैं क्लोजनेस कहूंगी. अब इस केस में क्या हो रहा है? आई एम गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू 2. कितना क्लोज? उस क्लोज को मैं कैसे डिफाइन करूं? अब इतना क्लोज कि हम उसके बिल्कुल टच कर जाए. पर अब टच नंबर्स तो इतने मजेदार हैं. दे आर they are very naughty. Their numbers, the moment you get closer to 2, जितना आप सोच रहे हो आप 2 के पास हो, लेकिन जिस नंबर पे आप हो और उसके और 2 के बीच में भी तो फिर infinitely many numbers आ गए, because they between any 2 real numbers there are infinitely many real numbers. So they are mischievous. They behave in a very mysterious way. So we have to just catch that mystery here. So what we do is, we say mathematicians are clever. They say, okay, you want to behave weirdly, we'll still catch you. So what we did was, we tried to give a numerical measure to this closeness. अब आप कहोगे numerical measure closeness का तो मतलब कहीं नंबर बोलोगे आप. अब नंबर जैसे ही बोलोगे तो जितना भी नंबर मैं बोलूं उससे छोटा एक नंबर एग्जिस्ट करता है जो क्लोजनेस डिफाइन. अब क्लोजनेस कैसे डिफाइन करते हो? क्लोजनेस का मतलब हुआ आप 2 चीजों के डिस्टेंस को मेजर कर रहे हो, ठीक है ना? अब इसमें देखो हमारे पास क्या चीजें हैं. अब हम वापस अपने जनरल टर्म पे आ रहे हैं. इट्स लाइक लिमिट x टेंडिंग टू a fx इज इक्वल टू l. अब इस केस में a क्या हो गया आपका? इट्स लाइक आई एम सेइंग लिमिट x टेंडिंग टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 इज 4. यही बात हो गई ना? अब इस केस में a क्या हो गया हमारा? 2, ठीक है. l क्या हो गया? 4. और fx क्या है आपका? ये रैशनल फंक्शन, ठीक है. अब इसमें हम कह रहे हैं, हम क्लोजनेस की बात कर रहे हैं, बट क्लोजनेस किसकी और किसकी? देखो इस केस में हमारे पास 2 चीजें हैं, एक x और एक fx. इसका मतलब हमारे पास 2 चीजें हैं, एक इनपुट और एक आउटपुट, ठीक है. इनपुट कौन गवर्न कर रहा है? x. आउटपुट कौन गवर्न कर रहा है? fx, ठीक है. अब इनपुट जो है वो किसके पास जा रही है? a के पास.
इस फंक्शन में हम किसके पास, हमारा पैर किसके पास जा रहा था, 2 के पास, राइट. सो इनपुट इज गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू ए, राइट. अब न्यूमेरिकली अगर हम बात करें तो हम एक्स वाई प्लेन में क्लोजनेस किससे मेजर करेंगे, डिस्टेंस से. डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ, x माइनस ए, ठीक है ना. अब अभी जैसे हमने ऊपर देखा, अगर ये मेरा a है तो मैं a के पास, सी अभी हम सिर्फ x एक्सेस पे बात करें, क्योंकि हम इनपुट की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ x एक्सेस पे बात कर रहे हैं. इसका मतलब हमें सिर्फ इस लाइन पे चलना अलाउड है और कहीं हम चल नहीं सकते, ठीक है. तो इसका मतलब a के पास पहुंचने के लिए मेरे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो मैं यहां से आ सकती हूँ या मैं यहां से आ सकती हूँ, ठीक है. इसका मतलब अगर मैं ये डिस्टेंस मेजर करूं, अगर मैं यहां हूं, ठीक है, तो मेरा डिस्टेंस यहां से यहां का मेजर होगा, और अगर मैं यहां हूं तो मेरा डिस्टेंस यहां से यहां का मेजर होगा. तो इसका मतलब या तो मैं जहां खड़ी हूं वो नंबर ए से छोटा होगा या वो नंबर ए से बड़ा होगा. तो इसका मतलब जो मेरा डिस्टेंस है जहां पे भी मैं खड़ी हूं, चाहे मैं यहां खड़ी हूं चाहे मैं यहां खड़ी हूं, राइट. सो जो भी मेरा डिस्टेंस है वो या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि मैं किस डायरेक्शन में खड़ी हूँ. तो हमने कहा ठीक है, बार बार नेगेटिव पॉजिटिव को क्या हम बार बार देखें, हमने इस डिस्टेंस को बोल दिया लेट्स टॉक ऑफ दिस मॉडुलस ऑफ x माइनस ए, बिकॉज मॉडुलस का एक पॉजिटिव एक बेनिफिट है दैट इवन द नेगेटिव टर्म्स बिकम पॉजिटिव, ठीक है. तो अपने ड्रॉबैक्स भी है मॉडुलस के, मैं ये नहीं कह रही, बट इट्स ओके, ठीक है, हमारा आसान तरीका है. तो इसीलिए हम जब इस केस में बात करेंगे तो हम अपने डिस्टेंस को मेजर करेंगे मॉड ऑफ x माइनस ए से. इज दिस ओके? अब आउटपुट किसके पास जा रहा है, आउटपुट इज गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू एल. इसका मतलब अब मेरे को फिर से डिस्टेंस किसका मेजर करना हुआ, एफ एक्स माइनस एल का. अब देखो जो मैं कहानियां सुना रही हूँ समझ आ रही हैं, है? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. इनके देखो ये मेरे में ड्रॉबैक है कि मैं मैथ्स भी स्टोरी की तरह सुनाती हूँ, तो इसलिए सो मत जाना, ठीक है. मैम ये इजियर है. ओके, इट्स लाइक दिस. ये हमारा ए था, ठीक है. अब फॉरगेट अबाउट पहले वाला कर्व जो हमने ड्रॉ करा. अब हम कोई एक जनरल ले लेते हैं. अभी मैं इसको कंटिन्यूअसली ड्रॉ कर रही, इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ, कोई भी, ये मेरा एफ एक्स हो गया, ठीक है. अब देखो इस ए पे मैं कह रही हूँ यहाँ पे एक गैप था जिसके कॉरेल, अब हमने क्या किया, व्हेन एफ एक्स इज ए, हम लिमिटिंग वैल्यू बोल रहे हैं ना इसको, तो आउटपुट की भी, तो इसका मतलब मेरी एक्स एक्सिस पे किसकी वैल्यूज है, मेरे इनपुट की, और मेरे वाई एक्सिस पे किसकी वैल्यूज है, मेरे आउटपुट की, ठीक है. तो अब ये लिमिटिंग वैल्यूज है मेरी कि व्हेन x वाज अप्रोचिंग a माय लिमिटिंग वैल्यू वाज l. इसका मतलब यहाँ पे कहीं l है, ठीक है. अब मैंने कहा ठीक है इसके आसपास चलते हैं, सपोजिंग मैं यहाँ पे आई, ठीक है, ये और ये. तो अब shall I draw it with a different color, maybe you know आपको फिर दिखेगा. ये मेरा हुआ वैल्यू ऑफ द फंक्शन जब मैं x a से थोड़ी सी पहले थी, ठीक है. और ये मेरा वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगा. मैंने एक्चुअली ग्राफ बहुत वैसा सा बना लिया, बट आई थिंक आइडिया विल बी क्लियर टू यू. ये मेरा वैल्यू हो गया जब मैं a से थोड़ी बाद में गई, ठीक है, और यहां पे आ गया l. इज दिस ओके नाउ? अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं a से थोड़ी पहले हूं, अब ये था ना मॉड x माइनस ए, जब मैं a से थोड़ी पहले थी तो मेरी आउटपुट ये थी, और जब मैंने a को क्रॉस कर लिया तो मेरी आउटपुट ये हो गई, ठीक है. तो ये हो गया मेरा एफ एक्स माइनस एल. अब ये वाला जो, अगर मैं ये वाला वैल्यू देखूं तो ये तो वैल्यू एल से छोटी है, ठीक है,
और अगर बाद वाला वैल्यू देखो तो ये एल से बड़ा है, तो दैट मीन्स अगेन माई एफ एक्स माइनस एल ऑल्सो कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको हमने इसका भी मॉडुलस ले लिया क्योंकि हम तो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। ठीक है, अब बात आई, अब हम इस क्लोजनेस को कैसे डिफाइन करें। ठीक है, अभी एक्चुअली मैं इसलिए समझा रही हूँ, इसमें बहुत ज्यादा हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन जब तुम सेकेंड सेमेस्टर में थियोरी ऑफ रियल फंक्शंस पढ़ोगे तो उसमें ये लिमिट का कंसेप्ट तुम प्रूव भी करोगे फंक्शंस के लिए इस तरह से। तो इसीलिए अभी अगर कंसेप्ट समझ लोगे तो तब प्रूव करना आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। ओके, अब देखो, अब हम कह रहे हैं कि हमने इसको न्यूमेरिकल मेजर देना है, बट न्यूमेरिकल मेजर देखा जाए तो ये दो अलग अलग हो गए ना, इन द सेंस अगर मैं इसको एक रेक्टेंगल मानूं, ठीक है, यहां से यहां तक का एक्स की इनपुट की डिस्टेंस का, तो इस रेक्टेंगल की विड्थ तो ये हो गई। ठीक है, और ये मेरे आउटपुट का रेक्टेंगल बना, इसकी विड्थ ये हो गई। दोनों सेम नहीं है, डिपेंड्स अपॉन क्या है। अब मैथमेटिशियन तो मैथमेटिशियन होता है, उसने कहा मैं सब कुछ कर सकता हूं। ठीक है, तुम मुझे बोलो तुम क्या चाहते हो, राइट। इसका मतलब तुम मुझे बोलो, मतलब एक क्लास का बच्चा था, 12th क्लास का, उसको लिमिट निकालनी थी, तो उसने बोला मेरे को एफ एक्स एल के पास जाना है। उसने बोला कितनी पास? मैंने पूछा उससे, मतलब उसने बोला, मतलब मैथमेटिशियन ने उससे पूछा कितनी पास? उसने बोला डिस्टेंस मेरा 2 डेसिमल प्लेस तक भी हो तो भी चलेगा। उसने कहा ठीक है, मैं तेरे लिए उतना पास कर दूंगा। Then there came a scientist who was working at some research lab. So he said, I want my fx to get closer to L. Then he asked, kitna pass? He said, I need at least up till 20 decimal places. He said, oh, so you want to go that close to your L? So he said, okay, I'll define something for you. Then there came a scientist from NASA. He said, no, nothing doing. I can't afford any error. मेरा तो रॉकेट स्पेसशिप कहीं का कहीं पहुंच जाएगा अगर मैंने जरा सा भी एरर इसमें दे दिया तो। सो आई वांट टू गेट एज क्लोज एज पॉसिबल। तो उसके लिए हमने क्या करा, मैथमेटिशियंस व्हाट दे डिड वाज दे केम अप विद टू नंबर्स, एप्सिलॉन एंड डेल्टा। ठीक है, epsilon and delta, they are two real numbers that can be as small as possible. Definitely epsilon definitely less than 1. क्यों less than 1? क्योंकि अब ये हम नंबर लाइन पे हैं। ठीक है, अब a से पहले जो भी नंबर होगा 1 की यूनिट पे डिफरेंस में, तो वो तो एक दूसरा रियल नंबर हो गया ना, मतलब नंबर नेचुरल नंबर हो गया, नॉट रियल नंबर, दैट बिकम्स अ नेचुरल नंबर। तो उस पे तो हमारा फंक्शन डेफिनेटली एग्जिस्ट कर ही रहा है, राइट। सो उसने कहा कि आप मेरे को डिफाइन करो कि जब भी मेरा आउटपुट और एल का डिफरेंस एप्सिलॉन से कम होगा, एप्सिलॉन से कम होगा मतलब अब इसका अगर मैं इस इनइक्वालिटी को खोलूं तो बेसिकली मेरा एफ एक्स जो है वो एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में लाए करेगा। ठीक है, अब एल माइनस एप्सिलॉन मतलब ये वाला पॉइंट, एल प्लस एप्सिलॉन मतलब ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब ये विड्थ हो गई ना हमारी इस रेक्टेंगल की, जो मेरे आउटपुट्स मतलब ये कर्व की, इस पोर्शन ऑफ द कर्व की ये विड्थ हो गई एक तरह से, राइट। उसने कहा कि ठीक है, यू गिव मी हाउ क्लोज यू वांट। सो somebody said I want my epsilon to be 0.1. Somebody said no, I want my epsilon to be 0.0001 because I want my output to be this close to L. So somebody said no, my epsilon should be 0.00000001. So depending upon what I want, I can always define the
So depending upon how much closeness do I want, I gave this this term. We introduced this term, which we are calling as epsilon. Okay. Now, this epsilon is going to define the closeness between your input. In the sense, as you can see, the width of this rectangle also depends upon the width of this rectangle. Okay. If you want this rectangle to be broad, no, इसको और extend कर दो यहाँ से यहाँ तक, तो definitely आप A से भी और दूर हो जाओगे, right? So that means if I want, it depends upon how close do I want to go to my output. That is going to govern how close should I go to my input. Okay, it's like, as I said, you were moving your hand here, right? Then you say, no, I want this close that at least my finger should be almost there. Kitna distance pe say itna distance pe. Okay, so that means whenever this happens, then my x minus a should be less than delta. That means this part becomes a minus delta, this part becomes a plus delta. That means for a given epsilon, I must know this. I must know my epsilon. That's why we say for a given epsilon more than 0, that's it. No other condition we put. We just want that this epsilon should be more than 0. So more than 0 can be any number as small as possible. So you think of some epsilon more than 0, I can give you a number which will be smaller than your epsilon. So epsilon can be as small as possible, but it should be fixed. It should be given. Okay. So for a given epsilon more than 0, we can always find a delta more than 0. That means if I know this width, I can find this width. Okay, such that whenever this happens, then this happens. Okay, so mind you, again, I'm saying whenever this happens, that means I am fixing the closeness of my output with the limiting value. Okay, but I want, so we have to find this L actually. When I'm saying, well, you'll do problems, that means you will find this L. Okay, how to find this L? So that means I have to find this L in such a manner that for a given epsilon more than 0, whenever L is this close to out fx, then A gets this close to x, or my x gets this close to A. That means whenever the difference between the output and L is less than epsilon, the difference between the input and A is always less than delta. This is the definition of limit, which as a student of mathematics, you should be knowing now. Okay, I'll just write it formally for you. And as I said, we won't be using it, but you should understand the concept because you will be using this definition to find the limits. Okay, so we say that limit x tending to A, fx is equal to L if for a given epsilon more than 0, there exists a delta more than 0 such that whenever mod of fx minus L is less than epsilon, then mod of x minus A is less than delta. This is how we define limits. Okay. Now this, don't forget it, because it's like you have laid your foundation stone. इसके बाद चाहे आप multivariate calculus पढ़ो, चाहे आप real analysis पढ़ो, चाहे आप complex analysis पढ़ो, everything is going to revolve around this definition. So don't ever forget this definition.
इट शुड बी, सोते सोते भी कोई जगह के बोले ना लिमिट की डेफिनेशन क्या है, देन दिस शुड बी योर डेफिनेशन ऑफ द लिमिट. अब ये तो हुई फाइनाइट लिमिट की बात. उस दिन हमने बात करी थी. अब जैसे ही हमारे पास ये डेफिनेशन आ गई, उसके बाद अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स अपने आप आ जाता है. अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स मतलब जैसे यू हैव डन इट. सी, यू हैव सीन हाउ डू यू फाइंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए fx plus gx. कैसे निकालते हो? हाउ डू यू फाइंड? तुम्हारे पास दो फंक्शंस का सम है और उसका लिमिट निकालना है, तो कैसे निकालते हो? मैम अलग अलग कर देते हैं दोनों अलग अलग फंक्शन को, लिमिट कर देते यू हैं. फाइंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए fx अलग से निकाली, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए gx अलग से निकाली और उनको ऐड कर दिया, है ना? सेम गोज विद सब्ट्रैक्शन, राइट? Yes, ma'am. सो दिस इज कॉल्ड एज अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स. इसी तरह से प्रोडक्ट, इसी तरह से क्वोशंट. हम क्वोशंट पे कंडीशन हम ये लगा देते हैं, इट शुड नॉट बी जीरो. ठीक है ना? तभी तो दैट इज व्हाई द डिविजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, right? So that is why we conclude that limit extending to 2x square minus 4 upon x minus 2 is equal to x plus 2, or just is equal to limit extending to x plus 2 which is equal to 4. ठीक है? अब ये हुई लिमिट की बात, फाइनाइट लिमिट्स, राइट? अब बात आई जब हमने कल बात करी थी, जो हमने लिमिट्स एट इंफिनिटी और इनफाइनाइट लिमिट्स डिफाइन किए. ठीक है? उसमें हमारे पास क्या मैम चीज? 4 राइट आंसर है ना वैसे. दैट 4 is you no 4 is not the right answer, dear. 4, when you say 4, you say it has a limiting value of 4. ओके मैम. Okay? Otherwise, whenever you say if somebody asks you what is f of 2 here, you say f of 2 is not defined, but limiting value is 4. Okay? क्योंकि ओके मैम. देखो ऐसे भी फंक्शंस हैं जिनकी हम लिमिट निकाल ही नहीं सकते. sin 1 by x as x approaches 0. तो इन फंक्शंस की हम वैल्यूज नहीं निकाल सकते, जो लिमिट, जिनकी लिमिट भी नहीं. देखो ये तो हुई वो सारी बात जिनकी, ये फंक्शन हुआ जिसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती बट लिमिट एग्जिस्ट करता है. कितने फंक्शंस ऐसे भी हैं जिनकी ना तो वैल्यू एग्जिस्ट करती है ना लिमिट एग्जिस्ट करती है. ऐसे भी तो हैं. ठीक है? उनको हम बाद में हैंडल करेंगे, आगे चलेंगे. ठीक है? ओनली एक मिनट. Since I just saw maximum students right now, let me save your attendance. Okay. Now, as I was saying, we were talking of infinite limit and limiting limits at infinity. हमारे पास दो चीजें हैं थी. एक थी, हमने बात करी लिमिट एक्सटेंडिंग टू c f of x is प्लस माइनस इंफिनिटी, कुछ भी ले लेंगे, माइनस प्लस बाद में कर लेंगे. एक ये था. ठीक है ना? और दूसरा था लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी fx was say m, कुछ कह लेते हैं इसको. ये दो चीजें थी ना. दिस वाज लिमिट एट इंफिनिटी. ठीक है? एंड दिस वाज इनफाइनाइट लिमिट्स. ठीक है? अब इसको जो अभी हमने लिखा उससे कंपेयर करो. अभी हमने लिखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx is n. ठीक है ना? अब ये पहले इनफाइनाइट लिमिट की बात करते हैं. इनफाइनाइट लिमिट में क्या हो रहा है? आपका इनपुट जो है एक्सटेंडिंग टू c is same as extending to a, right? But your output is not L now. Your output is infinite. That means what? That means as your input gets closer and closer to c, your output is becoming larger and larger. ठीक है? अब आउटपुट इज बिकमिंग लार्जर एंड लार्जर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देखो, अब हमारे पास इसमें दो चीजें थी ना, एप्सिलॉन और डेल्टा. नाउ एप्सिलॉन was measuring the distance between, epsilon was the measure of closeness
between the output and the limiting value, right? And delta was the measure of closeness for the inputs. इनपुट x था और इनपुट वैल्यू क्या थी a, ठीक है ना? अब इस केस में क्या हो रहा है कि x इज अप्रोचिंग अ फाइनाइट वैल्यू, मतलब डेल्टा तो एग्जिस्ट कर रहा है, बिकॉज हम मॉड ऑफ x माइनस सी लेस देन डेल्टा बोल सकते हैं, बट हमारा आउटपुट क्या हो रहा है, जितना सोच सकते हो बड़ा उससे भी बड़ा होता जा रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब ऐसा L एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है? इसका मतलब क्या हो रहा है इस केस में कि आपका जो आउटपुट है दैट इज ग्रेटर देन, सॉरी मैंने यहां पे भी m लिख दिया था, I'm not talking to anyone right now. ये जो आपका आउटपुट था ये इसको हम स्मॉल l कह देते हैं, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो आउटपुट है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कितना बढ़ता जा रहा है? आपने बोला मैंने एक जितना बड़ा नंबर मैं सोच सकती थी मैंने सोच लिया, ठीक है? बट मैं आपको कह रही हूं कि नहीं, आपका आउटपुट उससे भी ज्यादा बड़ा है, तभी तो हम इनफाइनाइट तक पहुंच रहे हैं, राइट? सो इन हेलो बेटा, I am in a class right now, call me after 5 minutes. So in this case, what is happening is that your output is becoming as large as possible when your input is getting closer and closer to C. ठीक है? इस केस में क्या हो रहा है? आउटपुट बढ़ रहा है. इस केस में क्या हो रहा है? डेल्टा एग्जिस्ट नहीं कर रहा क्योंकि x बढ़ता जा रहा है. इसका मतलब आप अपने x को जितना बड़ा करना चाहो कर लो, बट आपका आउटपुट जो है वो L के आसपास रहेगा, ठीक है? तो दोनों में डिफरेंस हो गया. इसमें हमारा आउटपुट बढ़ रहा है, इसमें हमारा इनपुट बढ़ता जा रहा है. कितना बढ़ रहा है? जितना बढ़ना, जितना आप बढ़ा सकते हो. For somebody m can be 10,000, for somebody m can be 10 lakhs, for somebody m can be 10 crores, for somebody m can be 1 into 10 to the power 10,000. It could be anything as large a number as you can think of. Still there would exist a larger number m such that your output would be still greater than that. Come when your input gets closer and closer to C. Okay, so this was the concept for infinite limits and limits at infinity. The same kind of a definition. तो अगर एप्सिलॉन और डेल्टा दोनों फाइनाइट है, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो लिमिट भी फाइनाइट है. दोनों में से एक गायब हो गया तो हमारे पास या तो ये केस होगा या ये केस होगा. Is this clear? Okay. Now I won't take much longer because that's what I said. I won't be formally starting 4.4 unless I am sure about your, the concept of limit. तो आप 4.4 में एक काम कर सकते हो, जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स है ना, जो शुरू के दिए हुए हैं, when you are finding infinite limits and infinity, वहां तक के, और ये वर्टिकल एसिम्प्टोट्स और हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट निकालना, ये तुम कर सकते हो एग्जाम्पल नंबर 6 तक, राइट? सो रीड 4.4 and do the first 6 examples of 4.4. That's all. अभी और कुछ मत करो इसमें. We'll do it next time. Okay? The remaining part we'll do next time. अभी I'm not doing much here. Okay.